Namaskar and welcome, friends. Today we're going to be talking about Gen Z, a generation born between 1997 to 2021, a generation born with UPI, social media, TikToks, and credit cards. How this generation is born in the toughest of times that have ever existed, and why this generation would be broke if they do not take care of their financial spendings and their financial discipline. So let's begin with this video. I am going to show you an age old diagram which is called Maslow's hierarchy, and I'm also going to use a bit of Hindi in this video so that I can resonate with people much better. So Maslow's hierarchy is a chart and a table which takes you from the bottom to the uppermost layer of your life. Now, this chart came out in the 1940s, and till the time it's 2025 now, and now this chart is actually flawed and it does not work in the society. How we know this is because at that time when 1940s were there, the World War II was just done with, people were very poor across the world, and that is why the certain hierarchies in the chart belong to where they are right now. So we begin with the base as your physiological needs. Now these needs are your basic food, water, clothing, and all of the lowermost basic things that you need to sustain your life. Our Gen Z now has already achieved this stage. They did not have to work for it. Their parents belong to a certain group in the society. उन्होंने मेहनत करके they have done hard work. Their parents, the millennials plus their boomers, all of them have really worked really hard for this. The second needs in the Maslow's hierarchy is the safety need. Now, this would include your house, fire uh, built by wood. Earlier, it used to be fire built by wood, but then now we have gas stoves and everything. Basically, इसमें ये है कि आप अपने घर में safely सोएं. You do not have wild animals attacking you in the middle of the night, and this need is also met for our Gen Z. Now, the next comes as social needs. Social needs is directly putting you into a social structure, your family, your relationships, your even social media these days. तो सारी चीज़ें जो है अब आपका डायरेक्ट जो जेन जी को एक्सेस करना है, दैट इज़ सोशल मीडिया एंड सोशल नीड्स एज वेल. सो you have directly been thrown into this hierarchy as and when you're born because all the other needs are met. Now you start operating in the social needs strata. Now working on your relationships with your parents, with your sisters, with your brothers, आपके दोस्त होंगे, plus your equation in your school, in your college, in your job place. जिस तरीके से आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं उस हिसाब से आप इस वाले हायरार्की में आप ऊपर या नीचे जाते हैं. द नेक्स्ट प्लेस इन द हायरार्की इज योर एस्टीम नीड्स. what are esteem needs now? So esteem needs are where you have to build your self esteem. अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना कि हाँ, आई एम अ प्राउड इंडिविजुअल, आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ द सोसाइटी. ऑल ऑफ द सोशल नीड्स एंड द सोशल शो ऑफ दैट आई हैव. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कार है, अगर मेरे पास घर है, तो इज़ इट माई फादर्स और इज़ इट माइन? Now the youth is actually trying to build their own material things as well. एक तो प्रॉपर्टी आपके फादर की है, who you're already gonna get that in later in your life. But then when your social needs, you understand that when your social needs do not meet the requirement that you desire, मतलब आप अपने सोशल सर्कल में, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वैगनार में घूमते हैं और आपके फ्रेंड्स से सफारी में घूमते हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड कि मेरे पापा ने मुझे वैगनार तक ला के दिया है, अब मुझे मेहनत करके सफारी तक जाना है उस लेवल पे. तो उस चीज़ के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं और कैसे वहाँ अचीव करते हैं, वो आपको वापस फेंक देता है नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स पे. अब फिजियोलॉजिकल नीड्स पे व्हेन यू मूव away from your father's money, you start working, you start doing jobs. आप उस वाली जॉब को अब बेसिक नीड्स से कवर कर रहे हैं. फिर आपकी
जो है सिक्योरिटी नीड्स आ रही हैं, तो उस सिक्योरिटी नीड्स में भी यू आर स्पेंडिंग योर ओन मनी, यू आर अर्निंग एंड यू स्पेंडिंग योर ओन मनी। नाउ द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट इज कि जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो आप अपना पैसा कमा रहे हैं एंड द अर्निंग्स आर नॉट गोना बी टू मच, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट योर फैमिली बिजनेस, दिस इज नॉट समथिंग योर फादर हैज़ प्रोवाइडेड यू विद। ये सब आपको अपने आप करना है। सो यू आर थ्रोन बैक टू द साइकिल। आप धीरे धीरे करके फिर ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूर 25 एंड यू बिन थ्रोन बैक। आप अपनी जॉब शुरू करते हैं, यू स्टार्ट अर्निंग विथ 40,000 50,000 रुपीज़ अ मंथ। अब धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपने लिए चीज़ें खरीदते हैं एंड देन यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद योर सोशल कनेक्शंस एज वेल। तो आपकी जो इमेज है पहले थी कि आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करके यू स्पेंडिंग एंड यू शोइंग ऑफ, बट नाउ यू आर डूइंग इट योर सेल्फ एंड आप अपना स्ट्रैटा सोसाइटी में बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद जब आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स पूरी होती हैं देन ओनली यू कैन रीच द लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब हो क्या रहा है कि हमारे जितने जेंजी हैं बेचारे इस टाइम पर, आई वुड कॉल देम बेचारास बिकॉज आई टेल यू व्हाई दे आर स्ट्रक, व्हाई दे आर स्टक इन दिस हार्श वर्ल्ड लेटर ऑन इन दिस वीडियो। बट जो जेंजी है वो स्टार्ट ही सोशल पे करता है, उसको फिगर आउट करने में टाइम लगता है कि जी मेरी एस्टीम नीड्स अलग हैं। आई कैन नॉट गेट टू वेयर आई वॉन्ट विद माई फादर्स और विद माई फैमिलीज मनी। सिक्योरिटी एक तरीके को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि भैया घर है, खाना पीना है, सब कुछ है, तो वो एक बेसिक नेसेसिटी तो फिर भी हट जाती है। देन यू स्टार्ट वर्किंग अगैन और उसके बाद आप फिर मेहनत करते हैं ज़ीरो से एंड देन यू गो अप टू सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन तभी होगा जब आपने ये सब कुछ खुद किया हुआ है। इन एनी अदर केस अगर आप इफ़ यू डू नॉट कम टू द रियलिटी एंड यू डू नॉट कम टू द रियलाइजेशन कि मुझे खुद ही करना है, आई हैव टू डू इट माई सेल्फ, तो इवन इफ योर फादर एंड योर फैमिली लीव्स यू वेल्थ, दे लीव यू विद अ लॉट ऑफ मनी, यू वुड एंड अप डिस्ट्रॉइंग इट बिकॉज आपको सोशल लेवल्स पे compete करने के लिए यू वुड बाय अ सफारी, द थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर। अब आपकी जो कैश फ्लोज हैं, जो इनकम्स हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड अ सफारी, तो कल को आपके साथ obviously there are going to be financial problems. So come back to me and let's just talk about how this impacts the real life that you're living in every day. So you have iPhones. The desire to buy iPhones is the highest in Gen Z. You have credit cards. You have the YOLO and the FOMO concepts. दोबारा कभी नहीं होगा ये सब कुछ, एक ही बारी जीना है, मैं मिस कर दूंगा कि ये होना है वो होना है। होता क्या है कि you start spending money on one-time pleasures again and again, again and again. The social media has convinced the youth to such an extent कि उनको लगता है कि ये सब कुछ सच है और they have become social media chasers in fact. मैं कहाँ जाकर ऐसी सेल्फी खिंचवाऊँ कि मेरे फ्रेंड्स को लगे कि वाह मैं कहाँ घूमने गया हूँ, या लोग जेलस हों, या मेरी फॉलोइंग बढ़े। सो दिस इज़ वॉट द प्रॉब्लम ऑफ जेन जी इज़ राइट नाउ। So let me now explain how this plays out in the real life. But उससे पहले these kind of videos takes a lot of effort. अगर आप like या subscribe करें, even join the comment section, it will be really beneficial for me because I get this content from my paid subscriptions. I have an experience of dealing with a lot of people, a lot of consultations. The major ways this plays out in your life is earlier people used to have stable jobs. Now the Gen Z has gig economic jobs. Gig economy is actually good for you guys. It is sort of a self-made business. So any job for a starter right now would pay you around 30 to 50,000, but gig economy could fetch you anywhere between 40,000 to 1 lakhs to 1.2 lakhs depending on how hard you work. Now getting into gig economy is also getting into an unstructured, unscheduled, and an indisciplined sort of a structure where your life goes into a spiral. You have to understand that you cannot let your life spiral out of control. The timings that you have, the time that you get up, the time that you sleep, it has to be under control. Just because you do not have to reach office in the morning, आपको सुबह जाके अंगूठा नहीं लगाना, बायोमेट्रिक्स नहीं कराना, आपका अटेंडेंस नहीं लगना, it does not mean that you can sleep at any time that you want. आप 3 बजे सो रहे हैं,
5 बजे सो रहे हैं, जो गेटिंग अप एट 2 PM 3 PM. This is a short reason for you falling into a trap where you will be in debt by the time you're 30 years of age, or maybe the next 5 years of your life. Then Gen Z has everything on subscription. It's a subscription life. So you have to pay a fixed amount every month to a lot of services. For example, your Netflix, your Amazon Primes, your all the other OTT subscriptions. Then you have your Apple subscriptions that goes on for every month. There are multiple apps that you guys subscribe to. There are dating apps like Tinder, like I am not sure of a lot of names. Yes, Bumble was one, I was reading about it. So everything now is under a subscription. It is a continuous pay model for the business, and it is a continuous trap for you people. So you have to understand, you have to limit your subscriptions because they're going to be taking out money out of your pocket every month. And people who are working in gig economy, उनको हर महीने पैसा नहीं आ रहा, उनको गिग्स के ऊपर पैसा आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोजेक्ट उठाया, उसमें 30,000 का प्रोजेक्ट है, आपने वो कर लिया. यू डोंट नो येट वेयर द प्रोजेक्ट इज़ कमिंग फ्रॉम. अभी आप नए हो इस वाले काम में. फॉर एग्जाम्पल, जो सोशल मीडिया मैनेजर, आपको एक कंपनी ने बना दिया अपना जो मैनेजर है, एंड दे हैव गिवन यू जस्ट वन प्रोजेक्ट कि मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एंड दे हैव गिवन यू 30,000 रुपीज़ टू डू दैट. तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग करके 10-15 दिन में डिलीवर करते हो, बट देन यू हैव नो क्लू कि अगला आपका 30,000 का प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा. आएगा, इट विल कम, बट आपको डेट और टाइम एग्जैक्टली नहीं पता उसका. ओके, सो आई वुड यूज़ अ बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन द नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स because I'm a practicing astrologer as well. So what happens in your life these days is that you are surrounded by social media and comparisons. आपको you have a group of friends जो हर हफ्ते जाकर अपनी वीकेंड पे फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं. You like them, you also want to be a part of the group. So this is called Rahu. You never know what is the reality of someone's life on social media or through social media. क्या पता वो बाहर जाके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, घर जाके दे गोइंग बैक टू देयर ओन टॉक्सिक फैमिली, और वहाँ पर परेशान हो रहे हैं, दे आर इन डिप्रेशन, वो काम नहीं कर पा रहे, लेकिन सोशल मीडिया पे वो बहुत खुश हैं, और आप अपना घर उनको देख के जला रहे हो. सो दिस इज़ नॉट हाउ यू कैन कंडक्ट अ लाइफ. यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम सोशल मीडिया और गेट डिटैच फ्रॉम सोशल मीडिया. इसको एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं राहु, विच इज़ योर डिजिटल मीडिया. जो चीज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती वो आपको दिखाई जा रही है. समथिंग इज एक्चुअली बीइंग क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग फॉर यू ऑन सोशल मीडिया. सो द Gen Z हैज़ टू बी very aware of this situation. So the next point is going to be an absolutely astrological point. What Gen Z wants is all Venus and no Shani, where Shani is the giver of all the other rashis. Let me explain to you. Venus is your charm, Venus is your perfumes, Venus is your jewelry, Venus is your partner, especially your female partner. So the Gen Z wants everything to be beautiful. Everything beautiful is Venus. Now, to get everything that is beautiful, you need to have Shani. Shani is the कारक फॉर मेहनत. आपकी जो लेबर है, हाउस हेल्प है, दैट इज़ कॉल्ड शनि. आप जितना आप एफर्ट डालते हैं लाइफ में, जितनी आपकी लाइफ में डिलेज होती हैं, द काइंड ऑफ ग्रूसम ग्रिलिंग दैट यू गो थ्रू इज़ एक्चुअली कॉल्ड शनि. तो शनि जो है आपसे मेहनत करवाता है, एंड देन इट गिव्स यू द रिचेस. तो you want the riches earlier than working hard for it, then there is going to be a problem in your life. So this is about riches, because riches तो आएंगे नहीं, और आप आएंगे नहीं, and you would show off without having the backup and the money for it, so obviously you're going to land in trouble. So in the next 5 years you realize that this is going to be a pattern of how your life is going to go through. Now I'm going to give you a few remedies as to how you can control these situations, just a quick fire remedy through, so that you have an idea of basically. So the number one remedy would be, do not be a weekend chaser or a social media chaser or a picture chaser. So you've seen your friend going out on weekends, and this is the place. You have to go there, you have to get your picture clicked behind a certain in front of a certain background. Please do not do that. Refrain from doing such activities. This will spoil your discipline. The next point here would be, gig economy is actually very good for you.
It is sort of like a small business that you've opened up. Now, what you have to work at in the next 5 years is how to scale it. Understand that one person selling his time only has limited time to sell. If you make a company out of it, if you understand how to scale your business and grow to the next level where your involvement becomes less and you have actually and naturally and organically grown into a team, then this would turn out into the biggest achievement of your life. Another practical thing to do right now would be investing in SIPs. What SIP does is that it gives you a deadline every month, even if you're in a job or you're doing a gig for other people. If you do SIPs every month, you have a certain financial discipline that you have to keep. अब 2,000 का 3,000 का एस आई पी मत कीजिए, एटलीस्ट 20 to 30,000 का एस आई पी का टारगेट कीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर जॉब कि आपकी जॉब कितने की है. बट इफ़ यू आर इन टू गिग इकोनॉमी, पुश योर सेल्फ, बिकॉज जब आपको पता होता है ना कि मुझे पैसा देना है, तो यू वर्क हार्ड फॉर इट. आप उसको पुश करते हो कि उस पर और मेहनत करो and you actually get the money that you want to pay. Another important thing that we'll talk about is investing in yourself. Please, please, please spend money on yourself, not on anything else. Invest in your skills. There are certain skills that every person should know in the world right now. The number one skill would be, I would say, video editing. Second skill would be Photoshop or illustrations. The third skill would be filmmaking. So these are certain basic skills. It would also include your social media management. So these are the skills that are the basic for people. But then you can even go further and scale up and earn so many skills that your gig economy, the career that you've chosen as a gig economist actually fires off with so many skills that you have. No one else can replicate it easily. People spend a lifetime owning skills. So make sure every 3 to 4 months you enroll into an online course. It could be free, it could be paid, it could be through YouTube, through anything. But do invest in yourself. Do invest your time in upskilling yourself. And the most important point of the entire video is to have patience and not give up. Everything takes time, everything good takes time. So you have to be patient and not give up and keep going at it. Every day you have to work hard. Every time you're working, you have to be honest with yourself. There comes a time when everything you've done is there, plus there is nothing else that you can give more to a job. For example, आप 100% एक जॉब को दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं. You've been doing it for 10 years. So one day there is a certain concept called the Lollapalooza effect. What happens in that is you work hard, then all of other things align together, and then 1 plus 1 is no longer 2, it is 5. Then 5 plus 5 is no longer 5, it is 20. So things and situations start multiplying in a way that you get to the next level of where you want to in life. These are only a few basic things that you need to understand, but then developing a discipline, having patience, being mature enough to understand what the reality is, what fakeness is, how not to be influenced by social media. This is something that Gen Z actually needs to take care of. I put a lot of heart in this video. I hope you understood such concepts. अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, ना कुछ समझ में ना आया हो, please feel free to write in the comment section. Happy living and stay blessed.